So here is essay 450, evaluation of misstatements identified during the audit. Clearly the most simplest essay. इसमें मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है, मीनिंग मिसस्टेटमेंट का डिफरेंस बिटवीन amount, classification, presentation, or disclosure of a reported financial statement. Of what? Of a reported financial statement item. And amount, classification, presentation, or disclosure that is required for item to be in accordance of FRF. Yani what was required and what is being reported. Okay. Causes of misstatement: inaccuracy in gathering or processing data from which FS are prepared, omission of an amount disclosure, incorrect accounting estimate arising from overlooking or clear misrepresentation of facts, unreasonable judgment of management concerning accounting estimates, inappropriate selection and application of accounting principles. Okay, so what five things were? First is inaccuracy in gathering or processing data. Second, omission of an amount or disclosure. Third, incorrect accounting estimate arising from overlooking or clear misrepresentation of fact. Unreasonable judgment of management concerning accounting estimate. Inappropriate selection and application of accounting policies. उसके बाद आता है प्रोसीड्योर क्या है. ऑडिटर प्रोसीड्योर अगर कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होता है, पहला, accumulate the misstatements other than those that are clearly trivial यानी not important. Okay, communicate to management and request them to correct. If management corrects, perform additional procedure to determine whether misstatements remain or not. Okay, and if management refuses, understand the reason for not making the correction, reassess the materiality. If material, communicate uncorrected misstatement and their effect on his opinion, on auditor opinion, to TCWG with a request that uncorrected misstatements needed to be get corrected. If still it is not corrected, obtain a written representation from management, TCWG, with respect to their believing that effect of uncorrected misstatement is immaterial. Okay, और एक और चीज़ डिटरमाइन करो वेदर एनी रिविजन रिक्वायर्ड इन स्ट्रैटेजी और प्लान और नॉट. अगर जब मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाए तो पहले तो ये है कि मैटर कम्युनिकेट करो, और दूसरा है कि वेदर एनी रिविजन रिक्वायर्ड इन ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान. तो फर्स्ट वाला हो गया डिस्कस. सेकेंड है ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान रिक्वायर्ड रिविजन इफ nature of identified misstatements and circumstances of their occurrence indicate that other misstatements may exist that could be material. Okay, यानी इतना की और कुछ misstatement मिला तो फिर ऐसा अगर ऑडिटर बिलीव करता है कि देयर आर स्टिल like more misstatement that could be in the financial statement and could be material, then a revision is required in the audit strategy or audit plan. Or aggregate of misstatements accumulated during the audit approaches materiality determined in accordance with SA 320. और अगर मिसस्टेटमेंट्स जो एक्यूमुलेट हुआ है वो जो मटीरियलिटी डिटरमाइन किया गया था उसको मतलब उससे ज़्यादा मतलब लाइक इट्स हाईली मटीरियल. ओके, थोड़ा ये पर बहुत मटीरियल है, देन इट्स लाइक वी नीड टू प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर रिक्वायर होगा, या फिर कुछ और मतलब लाइक पहले सोचे थे सब्सटैंटिव करके ही कर लेंगे पर अब फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी चाहिए, दैन कुछ भी हो सकता है. तो इट रिक्वायर्स डिटर्मिन लाइक ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान require revision. Okay, so this was evaluation of misstatements identified during the audit, SA 450.